Okay, now we are taking a look at those questions in which we are having some gradient. So let's say here A is equals to 2, that is 2 upon 1. So rise is 2, run is 1, H is 1 and K is 2. So if I make a graph, so one thing should be kept in mind that its rise is 2 and run is 1. So you might take a look. Let's say I am making a triangle. So you may see that my run is 1 and my rise is 2. Okay. So now H is 1 and K is 2. So K2 means that it should be, let's say here, and H is 1. So it should be like this. So my vertex point is 1, 2. So this is 1, this is 2, this is 4. So let's say we are having another question. 1 upon 2 x plus 1 plus 1. So A is basically 1 upon 2 here. So rise is 1, run is 2. So H is minus 1 and K is 1. So I should be making a graph in which rise is 1 while rise is 1 and run is 2. So my graph should look like this. So you may see that if I make a triangle, so it's just for your understanding and nothing else. So the run is 2 and the rise is 1. And if I am making x-axis and y-axis, so H is minus 1. So H is minus 1 means that graph should be on the left hand side. The vertex point should be on the left hand side. So it's a tip to make x-axis and y-axis after drawing the graph. So you may not do mistake. So this is minus 1, this is plus 1, and this is 1.5. So this is the vertex point and vertex point is minus 1, 1. So let's say we are having another graph. Y is equals to modulus of 2x plus 4. So basically the problem in this question is that x should be separate.
So if x to be set, let me take another question. Let's say we have y is equals to modulus of 3x plus 6. So the problem is x should be separate, so we must take common 3. So this will become x plus 2, and modulus of 3 is basically 3 because it's a constant. So 3 times modulus of x plus 2. So here a is 3, that can be written as 3 upon 1. H is minus 2 and k is 0. So this means that if I am making a modulus graph, the rise is 3 and the run is 1. So rise 3 means that it should be like this. So if I am making a triangle, that's for just our ये सब हमारी अपनी लिए हम करते हैं ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि हम गलत तो नहीं कर रहे. सो ये हमारे पास 1 आएगा, ये हमारे पास 3 आएगा. नाउ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना होता है, तो एच हमारे पास -2 है. सो एच अगर हमारे पास -2 है, सो उसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो वाई एक्सिस है वो यहाँ बनेगा. So this should be my y-axis and this should be my x-axis. So let's say अगर मैं यहाँ पर ये दिखाना चाहूँ ट्राइंगल, तो मैं यहाँ दिखा दूंगा. So this is 3 and this is 1. So my vertex point is -2, 0. So this should be 6. Okay, now let's say we have a graph of minus modulus of x minus 3 plus 1. So we may say that a is -1. So this should be -1 upon 1. H is 3, k is 1. So actually this is the graph when a is positive and this is the graph when a is negative. So now I have to make a graph that should be the reverse V. So my graph would look like this, the reverse V. So the vertex point. The vertex point is 3 and 1. So this should be my y-axis. And this should be my x-axis. Because my vertex is
3,1. So this is -4, this is -2, and this is -2. So there is a slight mistake that it should be x plus 3 and my h is -3. So अगर मैं उसको -3 रहने देता तो h की वैल्यू जो +3 है वो मुझे पूरा ग्राफ दोबारा से बनाना पड़ता. चलिए, so we have another question. Let's say y is equals to modulus of 2 minus x minus 1. So now it is 2 minus x actually. So हम क्या करेंगे, हम यहाँ से क्योंकि x हमें पॉजिटिव चाहिए, so हम -1 को कॉमन निकालेंगे. तो this will become x minus 2. जब हम -1 को कॉमन निकालेंगे so -1 का जो मॉडुलस है वो +1 हो जाएगा. सो उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है. तो आप ये देख भी सकते हैं कि अब मैं मॉडुलस x -2 का जब ग्राफ बनाता हूँ तो वो ऐसा बनता है, इसमें वर्टेक्स पॉइंट जो है मेरा 2,0 है. तो अगर मैं इसी तरीके से अगर मॉडुलस 2 माइनस x का ग्राफ बनाऊं तो वो भी आप देखेंगे बिल्कुल सेम बन रहा है, कोई फर्क नहीं है दोनों में. तो इसका मतलब है कि अभी जो मेरे पास ग्राफ है वो मॉडुलस 2 माइनस x का बनाऊं या मॉडुलस x -2 का बनाऊं, बात एक ही है. सो यहाँ पर a is 1, h is 2, k is -1. So now I am making a graph. So it should be, let's say, like this. So h is 2. So this is my y-axis, while k is -1. So this should be my x-axis. So this is my vertex point, that is 2, -1. This is 1. This is 3. This is 1. So जैसे कि हम करते थे क्वाड्रेटिक्स में, तो वहां पर होती थी एक अदद लाइन ऑफ सिमेट्री. सो यहाँ भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है जो कि वर्टेक्स से पास करती है. तो अगर कभी आपसे लाइन ऑफ सिमेट्री पूछ लें, इक्वेशन पूछ लें उसकी, तो लाइन ऑफ सिमेट्री की जो इक्वेशन है वो होगी x इक्वल्स टू h. So that should be the equation of line of symmetry. So अब अगर मैं आपसे किसी क्वेश्चन में लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन पूछ लूं, so that is x equals to h, तो जो भी h की वैल्यू है वो आप बता देंगे कि भाई ये मेरी जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है. अच्छा, अब आपसे ना इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस भी पूछी जा सकती हैं. तो आपसे लेट्स से ट्रांसफॉर्मेशंस किस तरीके से पूछी जा सकती है. तो ट्रांसफॉर्मेशंस वही P1 वाली आपसे पूछी जा सकती हैं कि भाई y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 है एंड प्लस 2 है. सो वी मे से दैट इट इज ओनली ट्रांसलेशन ना. तो ट्रांसलेट क्या है यहाँ पर, ट्रांसलेट यहाँ पर जो होगी वो होगी -1 और 2. इसको अगर हम सेपरेटली बताएं तो हम कैसे बताएंगे कि ट्रांसलेट -1 on x-axis and then translate +2 on y-axis. So let's say we have another question
कि भाई 5y is equals to 5 minus 2 times modulus of x. तो यहाँ पर क्या क्या है, सबसे पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया. जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमने बेसिकली स्ट्रेच किया है. स्ट्रेच हमने किस पे किया है? ऑन y एक्सिस विद स्केल फैक्टर. स्केल फैक्टर हमारा कितना हो गया यहाँ पर? 2 हो गया. फिर हमने फंक्शन के साथ माइनस लगाया. तो जब माइनस लगाते हैं तो इसका मतलब इट इज रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस. तो अगर फंक्शन के साथ माइनस लग जाए तो वो रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस होती है. देन 5 प्लस हुआ है. जब 5 प्लस हुआ है तो पूरे फंक्शन में प्लस हुआ है. तो ये अब सब आपने फंक्शन की ट्रांसफॉर्मेशन पड़ी हुई है P1 के अंदर. तो ये सब कुछ वही है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें. Okay, let's say we have a question. F of x is equals to modulus 5 minus 2x plus 3. And they are saying that we should be making the graph from 2 till 8. And they want us to find the range of f as well. So first of all, we will be finding out we will be writing this as 2x minus 5. So 2 should be taken common. This will become x minus 2.5. So my vertex point A is 2, H is 2.5, and K is 3. So I should be making the graph for these values of x, given values of x. That is x equals to 2 till 8. So let's say this is my x-axis and y-axis. So my starting point is 2.5, 2 till 8. So let's say I am marking it. This is 2, this is 4, this is 6, this is 8. Let me draw this on the next slide. So let's say this is my x-axis and this is my y-axis. So these are the values 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So my graph should be start from 2.5 and it will go on onwards. So make sure that gradient should be 1. So my graph should look like this.
So when we talk about the range now, so we will look कि भाई हमने जो वैल्यूज हैं एक्स एक्सिस पे वो 2 से लेकर 8 तक ली थी, तो वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज यूटिलाइज हुई हैं वो हमारी वो यहाँ से लेकर हमारी यहाँ तक यूज हुई हैं, यही हमारी रेंज है। सो ये 2 से लेकर 8 तक था, तो ये जो है वो 3 से लेकर 4 5 6 7 8 एंड 8.5। सो मैं यहाँ रेंज अगर मुझे बतानी है, सो माय रेंज ऑफ द फंक्शन जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 3 से लेकर 8.5 तक, तो दैट शुड बी माय आंसर। So let's say we have another question. Y is equals to twice of modulus x minus 2 plus 1 from minus 2 till 6. So it means, okay, let's say A is 2 here, H is 2, K is 1, and they are asking us for the graph from minus 2 till 6. So let's say this is my graph. So it's starting from 1 2 3 4 5 6. And this is minus 1 and minus 2. So my H is at 2 and K is 1. Two and 1. I should be making the graph anywhere else. So 2,1 पे जब हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं, so because my gradient is 2, so it should be like this. It should be like this. So my graph should look like this. So now they are asking, what are they asking? They are asking कि भाई हमारे पास एक और लाइन है, so now they are saying that y is equals to x plus 2. We have another line, y is equals to x plus 2. So y is equals to x plus 2 obviously एक linear equation है,
तो इसका जो ग्रेडियंट है वो 1 है और c जो है वो 2 के बराबर है। तो इसका मतलब अब एक लाइन जो है वो पास होगी, कहाँ से पास होगी, 2 यूनिट से पास होगी, और उसका जो ग्रेडियंट है वो 1 के बराबर है। So let's say this should be my line now. So उन्होंने मुझसे ग्राफ पे वैल्यू मांगी है। जब उन्होंने मुझसे ग्राफ पे वैल्यू मांगी है तो this and this point, so let's say this is a point and this is b point. So using the graph, they are asking from using the graph. So a is basically 1,4 and b should be 1 2 3 4 5 6 7 8. So it should be 5,8. So by using the graph, they asked us to find out the values by using the graph.